किसी के मोहताज नहीं है, तो इसलिए मतलब ये टाइम थोड़ा बचेगा। उनका इंट्रोडक्शन सबको मालूम है, मेरे ख्याल में जितने भी प्रेजेंट हैं। तो जस्ट ये एक ब्रीफ रेफरेंस इस टॉपिक का जो ये आज टॉपिक है, TDVP मॉडल ऑफ रियलिटी हैज रिमार्केबल पैरेलल विद जैनिज्म। आपने ये पिछली बार भी ये लेक्चर दिया था, वो आधा पार्ट था, और नेक्स्ट पार्ट इसको ये आज प्रेजेंट करेंगे। तो ये निश्चित रूप से पिछली बार भी जो दिया था काफी अच्छा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी, जैसे मैं अपनी स्वयं की वीकनेस बताता हूँ कि बहुत सी चीजों को नहीं पकड़ पाया था, क्योंकि ये मतलब एकदम से बहुत ही डीप रूटेड और पॉइंटेड वो रिसर्च थी। तो आज हम देखते हैं कि वो आगे और ये पैरेलल बताने वाले हैं जैनिज्म में और TDVP मॉडल में क्या क्या पैरेलल्स हैं। तो हम ये आज सुनेंगे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना साहब को। तो पोखरना साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। ये मैं वापस कुछ लोग नए आए हैं तो मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, ताकि कुछ डाउट थे मतलब पहले भी, और कुछ ये व्हाट्सएप पे भी कुछ एक्सचेंज हुआ था, कुछ क्वेश्चंस रेज हुए थे। तो मेरा मतलब एट द आउटसेट मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये एक प्रिलिमिनरी अप्रोच है, मतलब और ये बताने के लिए कि दो अलग अलग सिस्टम के अंदर सिमिलरिटी ऑफ थॉट है, और दे आर थिंकिंग इन सिमिलर वे। मतलब और कोई भी नया काम होता है, कंपैरिजन करते हैं तो कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ उसमें इनकंसिस्टेंसीज भी हो सकती है, और कुछ सिमिलरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ सिमिलरिटी में मतलब थोड़ी वीक है मैं कहूँगा, और शायद इंटरप्रिटेशन का इशू है। तो वो होगा वो है, मतलब वो मैं एग्री करता हूँ मतलब इन प्रिंसिपल। लेकिन मेरा मूल जो चीज है बताने की वो ये है कि अगर 10 पॉइंट में भी एग्रीमेंट है तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज देयर समथिंग न्यू, मतलब कंप्लीटली न्यू थिंग्स आर देयर मतलब। और वो जैनिज्म के क्लोज है, तो मतलब ये मानना पड़ेगा कि जो जैनिज्म का जो कंसेप्ट है इट इज वेरी प्रोफाउंड, मतलब और उसको इंडिपेंडेंटली एक सपोर्ट आ रहा है दूसरे मतलब मॉडल से। तो दैट वी हैव टू अप्रिशिएट एक्चुअली। मतलब प्रॉब्लम है मतलब, तो वो मैं एग्री करता हूँ मतलब। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा जो नए लोग आए हैं और आपके लिए भी रिवीजन हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा पार्ट रिपीट करूंगा और उसके बाद मैं विल प्रोसीड मतलब। तो टीडीवीपी मॉडल, ये इसका पूरा नाम है, इट इज ट्रायडिक डायमेंशनल डिस्टिंक्शन वर्टिकल पैराडिग्म मॉडल। ट्रायडिक मीन्स थ्री, dimensional means dimensions like dimensions in space x, y, z, and one dimension of time t, or four dimensions 3s and 1t. Then distinction means something to distinguish from something else. ये जो कंसेप्ट है ये डिस्टिंक्शन का, ये बहुत प्रोफाउंड कंसेप्ट लगा मेरे को। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस। और ये जो अपना जैन धर्म का जो पर्याय जो है, उस पर्याय से मतलब काफी मतलब मिलता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं मिलता है, पर वो जो बेसिक जो उसका जो पर्सपेक्टिव है, वो पर्सपेक्टिव में काफी सिमिलरिटी है। आई वुड नॉट से मिलता है, पर देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द टू कंसेप्ट, आई मीन। Then vertical means it is means a motion like that of a vortex, that is motion about two axis or something like that, I mean जो अपने फिजिकल होता है। पर अगेन यहाँ पे जो वर्टिकल का कंसेप्ट है वो केवल स्पेस के टू डायमेंशन में नहीं है, मतलब नॉट नेसेसरी, वो काफी दूसरे डायमेंशन में भी हो सकता है, मतलब ये एकदम से अलग ढंग का कंसेप्ट है। एंड पैराडिग्म मीन्स ए वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, उसमें मतलब मेजर चेंज मतलब वो सजेस्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट। तो दैट वी हैव टू अप्रिशिएट एक्चुअली, आई मीन। तो उसमें जैसे मैं सिंपल उनका जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो बताना चाहूंगा पहले, जो मतलब जो नए लोग हैं उनके लिए। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में हम कहते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब तो ये 3, 4 और 5 दीज 3 आर इंटीजर्स और उनके स्क्वायर है, तो एक सिंपल अपन ये जानते रिलेशन मतलब। तो एरिया can be combined for two squares of lengths of 3 and 4 units giving rise to an area of 5 units, मतलब वो स्क्वायर मतलब उसका करेंगे तो मतलब। पर वॉल्यूम के अंदर we see that volume of two squares can be combined like 4/3 pi RA cube plus 4/3 pi RB cube is equal to say 4/3 pi RC cube.
अब ये अगर आर ए आर बी और आर सी रियल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आर ए आर बी आर सी इंटीजर है मान लो, तो देन इट हैज ए ह्यूज इम्पैक्ट, मतलब एक कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव आता है। और ये हमको उस सेंस में अप्रिशिएट करना चाहिए कि जितनी साइंस अभी है वो पूरी साइंस मतलब स्पेस और टाइम को कंटिन्यूअस वेरिएबल मानती है, मतलब। और कंटिन्यूअस वेरिएबल मान करके हम जितने हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है वो न्यूटन्स लॉ मान लो या आइंस्टाइन इक्वेशन मान लो या श्रोडिंगर इक्वेशन मान लो, वो सब इसको है जो कंटिन्यूअस वेरिएबल मान के चलते हैं। लेकिन अगर रियलिटी डिस्क्रीट है, जो जैनिज्म भी कहता है कि उसमें प्रदेश की बात करते हैं, आकाश वो प्रदेश की बात करते हैं और टाइम के अंदर समय की बात करते हैं मान लो, तो अगर वो फंडामेंटली अगर डिस्क्रीट है तो जो रियलिटी है उसको अंडरस्टैंड करने में वी माइट रिक्वायर ए डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर, मतलब वो वेरी मच पॉसिबल है। कुछ दूसरे साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली भी इस इश्यू को रेज कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने देखा था एटलीस्ट 2 साइंटिस्ट हैं वो इस इशू को रेज कर रहे हैं कि व्हाई नॉट कंसीडर रियलिटी टू बी डिस्क्रीट एंड डेवलप ए न्यू फॉर्मलिज्म फॉर साइंस इटसेल्फ। तो ये ऐसी मतलब कुछ आवाजें आ रही है उससे हमें, तो समहाउ अगर ये इंटीजर है मान लो डिस्क्रीट है, तो आर ए क्यूब प्लस आर बी क्यूब इजिकल टू आर सी क्यूब जो है, तो नो सॉल्यूशन इफ ऑल आर इंटीजर, तो फर्मेट लास्ट थ्योरम जिसको कहते हैं। Hence, 3 minimum units are required to combine to form a new particle. तो ये जो कंसेप्ट है ये इसका बेसिक वो फंडा है मैं कहूँगा। तो उसके हिसाब से क्या है कि x cube plus y cube is equal to z cube cannot have solution with all three as integers, but x cube plus y cube plus z cube is equal to p cube can have an integral solution, like 3 cube plus 4 cube plus 5 cube is equal to 6 cube, and that is 27 plus 64 plus 125 is equal to 216. So now neutrons and protons are made of 3 quarks, 2 top quarks and 1 down quark in case of proton, and 2 down quarks and 1 up quark in case of neutron. Why this number 3? और वही से उनका आर्गुमेंट शुरू होता है कि वो वॉल्यूम वाइज ये है जो एडिशन हो रहा है, मतलब जो 3 क्वार्क मिलकर के ये जो प्रोटॉन बन रहा है या न्यूट्रॉन बन रहा है, तो वो उनका आर्गुमेंट ये है कि वॉल्यूम वाइज एडिशन इज गोइंग ऑन इन दिस। सो वॉल्यूम ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट या फिजिकल नेचर वो उसमें सम हो रहा है, मतलब तो उससे वॉल्यूम का कंसेप्ट कर रहा है। तो उनका टोटल फोकस इस पे वॉल्यूम पे है कि वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो उससे आता है। तो अभी जैसे अब इसमें हमने क्या किया है कि अभी इसी कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और डिटेल में एक मिनट थोड़ा या प्रॉब्लम हो गया, ये ग्राफ यहाँ पे आ गया है। हाँ, मैं वहां पे वापस जाऊंगा, पहले आई विल कम टू दिस। हाँ, तो ये जैसे ये जो पहले 9 डायमेंशंस की जो बात करते हैं उसमें वो बताऊंगा कि 9 डायमेंशंस क्या है, मतलब so they have introduced the concept of a 9-dimensional finite quantized reality along with a discrete transfinite and an infinite continuous reality, which is in agreement with requirement generated due to Gödel's incompleteness theorem. तो अभी इसमें क्या है कि वो जो 3 डायमेंशन स्पेस के तो मानते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक कंसेप्ट है, पर वो टाइम के भी है जो 3 डायमेंशन मानते हैं, मतलब कि टाइम का एक डायमेंशन नहीं होता है, टाइम के भी है जो 2 डायमेंशन होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा और कॉन्शियसनेस के है जो कॉन्शियसनेस के भी वो कॉन्शियसनेस को डिफाइन करते हैं एंड दे कॉल इट द 3 डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। उसको वॉल्यूमेट्रिक कंसेप्ट अगेन वो मानते हैं, मतलब तो 3 space dimensions are described by real, rational or irrational numbers. 3 time dimensions are described through 3 imaginary numbers. 3 dimensions of extent of consciousness are described by 3 complex these numbers. So x plus iy, तो जो जैसे x plus iy है, तो I is imaginary variable. So these are the numbers we define consciousness in a consciousness का एक part, मतलब तो वो उसका जो उसमें वो मतलब क्या कहते हैं उसको अगर कॉन्शियसनेस को इक्विवेलेंट मानेंगे मान लो, तो उसके इक्विवेलेंट 3 डायमेंशंस, मतलब तो ये जैसे स्पेस के अंदर आप देखते हैं कि ये x y z 3 कोऑर्डिनेट है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, इज वेल नोन।
उसके बाद ये 3 डायमेंशंस ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो टाइम इज एज्यूम्ड टू बी 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशन करस्पॉन्ड्स टू फिजिकल टाइम। और क्यों करते हैं ये 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन का लॉजिक ये है कि 1 डायमेंशन करस्पॉन्ड्स टू फिजिकल टाइम। Then second time dimension is required to explain pre-recognition, which is well established now scientifically. More than 6 sigma, that is over a billion to 1 against chance. तो ये जो प्रोसेस है कि प्री रिकॉग्निशन होता है, तो प्री रिकॉग्निशन कैसे होता है, कैसे पहले पता लग जाता है, मतलब तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस a second dimension of time. Then third dimension is required to explain free will, which every sentient being has. Every sentient this being has. तो जो फ्री विल का जो कंसेप्ट है, फ्री विल को कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दे इंट्रोड्यूस अनदर डायमेंशन ऑफ टाइम। तो इसलिए ये टाइम के दे आर टॉकिंग ऑफ दिस 3 डायमेंशंस। और उसके बाद उनका आर्गुमेंट ये है कि टाइम हैज टू बी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी लाइन। तो ये फर्स्ट में देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ पतली लाइन जो है, that is explaining I mean a physical time which is linear, something like linear, so it is just like a line, but they don't say like this because they are talking of 2 dimensions, 3 dimensions. So they say that the middle arrow of that actually represent the 2 dimensions of time, और जो थर्ड वाला जो कर्व लाइन जो है वो कर्व लाइन है which represents 3 dimensions of time, but that is again volumetric. तो वो क्या ट्यूब लाइक कर्व ट्यूब है, ऐसा कोई कह सकते हैं अपन, मतलब तो ये वो कंसेप्ट उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस किया है, मतलब उसके बाद consciousness is mathematically incorporated into science. So consciousness which discriminate a living being from a non-living being is a part of this theory. It is introduced as one of the most fundamental part of reality. It is defined in such a way that it is present in all time and all space, and also is present at all level, starting from the deepest level of reality, that is at sub-quantum level to quantum level, atomic level, and goes up to ordinary physical, astronomical, and cosmological levels. It is a part of human brain or any sentient brain also, but is much more than that. They have included consciousness in science in a mathematical way, which is nothing but the greatest breakthrough in science, in my opinion, after the Einstein theory of relativity, in which space was combined with time in a mathematical way. So, अब 3 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ जो कॉन्शियसनेस के जो उन्होंने डिफाइन किए हैं, एक है एक्सटेंट, कि कॉन्शियसनेस का एक्सटेंट क्या है, मतलब ये साइज क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एटम की जो मॉलिक्यूल की जैसी है या पूरे यूनिवर्स जैसी है या कैसी है, मतलब तो एक एट्रीब्यूट जो उन्होंने डिफाइन की है वो है एक्सटेंट। That is, consciousness has extent just like a physical body has extent, which is expressed by 3 spatial coordinates x, y, z. Here the 3 dimensions are expressed through 3 complex variables, x plus iy, where I is an imaginary number. Then content, उसका consciousness का content क्या है, तो ये जो उसमें कहते हैं कि its contents are meaningful information. तो इन्फो जो जैनिज्म का जो कंसेप्ट है कि जो नॉलेज है इज अ मेजर एट्रीब्यूट ऑफ साउल, आत्मा, तो ये यहाँ पे लॉट ऑफ सिमिलरिटीज देयर, आई मीन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इम्पैक्ट कॉन्शियसनेस कैन हैव इम्पैक्ट ऑन मैटर और द अदर वे अराउंड, मैटर कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द कॉन्शियसनेस। ये अभी अपन जैनिज्म से कंपेयर एग्जैक्टली नहीं कर सकते कि वो दोनों अलग अलग है, मैटर अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है, मतलब तो यहाँ पे देयर इज सम काइंड ऑफ आई वुड से सम काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट इज देयर, मतलब अगेन दिस रिक्वायर फर्दर डिस्कशन। देन स्पेस टाइम एंड कॉन्शियसनेस आर टीदर मतलब वो ऐसे है जैसे कि हाथ की अंगुलियां होती है, जैसे space time and consciousness are although treated as approximately separate but are assumed to be tethered together at certain points from an infinite past. Now, this assumption can explain quantum entanglement, parapsychic phenomena, and even singularity at the time of Big Bang. That is what they claim, I mean. Then the distinction जो है, I will just go into the detail of this. So distinction क्या है? Distinction means we are distinguishing. हम कोई भी सब्जेक्ट लें, चाहे फिजिक्स लें, केमिस्ट्री लें, मैथमेटिक्स लें, बायोलॉजी लें, साइकोलॉजी, मिस्टिसिज्म, एनीथिंग वी टेक, मतलब हम हमेशा 2 चीज को कंपेयर करते हैं, मतलब कि
एक चीज है वो दूसरे से अलग है, उससे ज्यादा लंबी है या छोटी है, मोटी है या छोटी है, चार्ज है या अनचार्ज है, या we just distinguish two things using some kind of an element which can call it distinction. तो वो डिस्टिंक्शन की परिभाषा जो दी है वो बहुत मेरे को अपीलिंग लगी। मतलब तो distinction is most common element of reality and is used in all walks of life. Thus we distinguish something from the other, say ourselves from rest of the universe. ये जो फिगर दे रखा है for example, then aham or myself is different from others, or a red ball from white ball for example. तो ये डिस्टिंक्शन का जो कंसेप्ट है, इसमें क्या है कि टर्म यूनिफाइंग ऑल डिसिप्लिन, इसके थ्रू मतलब यू कैन यूनिफाई ऑल द डिसिप्लिन, मतलब क्योंकि हर डिसिप्लिन में ये कंसेप्ट जो है डिस्टिंक्शन का वो लगेगा। मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी प्रोफाउंड कंसेप्ट, वेरी प्रोफाउंड कंसेप्ट। आई मीन we actually require three entities for this to define the distinction. A body which is to be distinguished from something else, from some other body, for example. So for distinction, and so D stands for distinction and F for from. So D distinction and F is for from. So this something else, another body, for example, an entity which will distinguish the two, say a human being or its consciousness, C for consciousness. Then this simple concept has been given mathematical form using set theory and concept of form, which can be used in any discipline. So a standard notation for distinction is DFC. That is distinguished from through consciousness. मतलब तो consciousness से आप उसको अलग करते हो, मतलब you are able to distinguish it. So C is required for this purpose. I mean, so that is the, और ये distinction का जो concept है, it is there. I mean, I don't know. I was mesmerized when I heard this concept. I mean, और ये थोड़ा सा पर्याय से मिलता है कि पर्याय भी होती है, कोई भी मतलब आप दीजिए मतलब तो उसकी एक पर्याय होती है। पर्याय मतलब गुण होता है, पर्याय के अंदर वो ऑसिलेशन भी मानते हैं, पर बेसिकली पर्याय का मतलब एक उसका गुण है चीज का। तो गुण हुआ है कुछ चीज है तो इट डिस्टिंग्विशेस वन थिंग फ्रॉम द अदर, मतलब तो देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन द टू। आई मीन कैलकुलस ऑफ डिस्टिंक्शन ये है जो उसमें उन्होंने पूरा इसका फॉर्मलिज्म डेवलप किया है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम करंट मैथमेटिक्स, उससे अलग है। मतलब the whole TDP model is based on a firm mathematical background incorporating the calculus of distinction, assuming reality to be discrete. It is similar but different from the ordinary calculus used in science used to study reality by treating as continuum. उसमें वो continuum जो differential equations वगैरह लिखते हैं वैसा कुछ नहीं है, बट डिस्क्रीटनेस मान के और डिस्टिंक्शन का कंसेप्ट मान के फिर उसमें दो डिस्टिंक्शन को ऐड कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कंसेप्ट मतलब है जो वो डेवलप किया है। लगभग 150 पौने 200 पेज की किताब है उनके अलग से, और कैलकुलस ऑफ डिस्टिंक्शन। Then physical reality at fundamental level, जो मैंने अभी आपको कहा था कि discrete and not continuous. The TDVP approach initiates a methodology by assuming the observed reality to be discrete. और जैनिज्म का भी अगर लेवे मान लो माने, इस पर डिस्कशन किया जा सकता है, पर मेरे हिसाब से एक फंडामेंटल लेवल जैनिज्म में भी मानते हैं कि रियलिटी इज डिस्क्रीट, इट इज नॉट कंटिन्यूस। Now this is a very profound statement. It must be critically examined. वो which is very much needed, I mean मेरे हिसाब से। मतलब so but Nape and Close recognize that this discrete, but then again they go further that this discrete finite is embedded in an infinite continuous continuum which is not accessible to an ordinary person. और ये जो चीज है, ये कंसेप्ट अगेन जैनिज्म से बहुत मिलता है, क्योंकि जो डिस्क्रीट फाइनाइट है वो जो लोकाकाश है अपना, तो लोकाकाश है वो लोकाकाश के अंदर ही, जैसे ये जो 6 तत्व होते हैं वो लोकाकाश के अंदर होते हैं, और बाकी मतलब जो अलोकाकाश होता है जो कि लोकाकाश को सराउंड करता है, मतलब तो उसके अंदर कोई भी ये नहीं है, मतलब ये जो 6 तत्व है वो उसमें नहीं है। मतलब तो वे ये जो सिमिलरिटी है, ये अगेन आई इन माय ओपिनियन इज अ वेरी प्रोफाउंड सिमिलरिटी, वेरी प्रोफाउंड कंसेप्ट। मतलब क्योंकि अभी ऐसा कंसेप्ट मेरे ख्याल से जो जो ये फाइनाइट यूनिवर्स, ये यूनिवर्स मानते हैं एक्सपांडिंग यूनिवर्स, तो एक्सपांडिंग यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी यू रिक्वायर स्पेस आउटसाइड दिस यूनिवर्स,
but I don't think this is explicitly defined in science. Okay? There is something outside this universe. Expand कर रहा है, किसमें expand कर रहा है मतलब? So I would like to have some clarification from speaker, from audience also. So this is in contrast with the current scientific methodology which treats reality as continuous. All differential equations assume space and time to be continuous. तो ये एक और जबरदस्त concept है. Then discrete units in TDVP model and Pradeshas in Jainism. The similarity है again वापस. So the foundation of TDVP model is based on discrete nature, quantum at very fundamental level of reality. Hence they talk of discrete structure of space, time and consciousness. तो क्विस्ट उसको नाम दिया उन्होंने कि मतलब क्यूसिट्स फॉर स्पेस, और अपने जैनिज्म के अंदर वो प्रदेशास व वाकाशा इन जैनिज्म ये कंसेप्ट है. मतलब फिर टाइम के लिए उन्होंने जो दिया है वो एलिमेंट, वो उसको कहा है उन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट्स फॉर टाइम. तो अपने जैनिज्म के अंदर वो इट इज लाइक समय इन जैनिज्म. Then concepts for consciousness, it is just like Atma Pradesh, मतलब Atma Pradesh मानते हैं तो it is something like that. So there is a मतलब one-to-one similarity, I would say. However, this finite discrete reality is embedded in infinite continuum. The idea is close to concept of Lokakash being surrounded by Ananta Lokakash. So ये again there is a very profound similarity. मतलब then content of space, time and consciousness domain. So इसमें क्या है कि स्पेस टाइम है जो डोमेन है, उसके जो कंटेंट क्या है उसके अंदर, तो उसमें जो कंटेंट है वो है एनर्जी एंड मास. दीज आर टू बेसिक थिंग्स आई मीन. और उसमें बाद में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आर द कंटेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस जो है उसके कंटेंट्स क्या है, तो उसके कंटेंट्स है इंफॉर्मेशन. So just as in Jainism where knowledge is an intrinsic property of an Atma, there is a similarity here again. I mean कि ये information को मान रहे content उसका, और Jainism के अंदर हम कहते हैं कि knowledge is the most profound attribute of Atma. दूसरा ये मान रहे bravery है, love है, hatred है, emotions, perception and volitions. ये भी उसको है जो वो उसकी मतलब है वो consciousness का contents मानते हैं. Then there is an important concept of vortices. Vortices allow for communication across dimensions. Again, ये जो vortices का concept है, इनका जो ordinary vortices की अपन बात करते हैं, उससे अलग है, थोड़ा अलग है. मतलब it is more enlarged. I mean more extended one. So normally vortices reflect any three-dimensional moving, fluctuating, curved or rotational content within, across or between dimensions. This is how they define. और इसमें डायमेंशन से स्पेस डायमेंशन हो जरूरी नहीं है. मतलब इट कैन इन्वॉल्व डायमेंशन लाइक टाइम आल्सो. मतलब टाइम के डायमेंशन और स्पेस के डायमेंशन वो भी कंबाइन हो सकते हैं. तो उसमें जो रोटेशन होगा वो भी है जो लाइक इस टाइप ऑफ ए वोर्टेक्स. मतलब in part because of the asymmetry of the multidimensional content variables in response to linear or rotational forces, vortices are very commonly found in nature in our 3s1t domain. ये थोड़ा mix up हो गया है. The interfaces across vortices can be facilitated through by scalar, vector or tensor elements. The process is vortical. This intervention एक नई टर्म उन्होंने मतलब इसके लिए यूज की, इसको डिफाइन करने के लिए. तो कंसेप्ट ऑफ vortices इट इज वेरी क्लियर. शोन मतलब कि जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो मान लो जो उसका मूवमेंट हो रहा है दो डायरेक्शन, ये लकड़ी का जो भमरा कहते हैं, लट्टू का मूवमेंट होता है वो टू एक्सिस पे होता है. इसी ढंग से वॉर्टेक्स ये मान लो सपोज ये जो ये वॉश बेसिन होता है, उसके अंदर जो पाइप होता है नीचे, तो पानी डालते हैं तो उसके अंदर भी सम काइंड ऑफ वॉर्टिसेस आर फॉर्म्ड. है ना. तो उसी ढंग से अर्थ है, अर्थ भी मतलब दो एक्सिस पे घूमती है. So this also has a vertical motion. बहुत सी गैलेक्सीज वगैरह वो भी उनकी वर्टिकल मोशन होती है. The recent experiment पे हाँ ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने इनका लेक्चर सुना था मैंने PRL के प्लेटफॉर्म पे. तो उन्होंने he has studied on mixture of quarks and gluons and he also arrived at this conclusion that vertical motion is a basic property at very fundamental level. This is a very again I mean a very profound concept. मैंने उनको पूछा भी था मतलब have you actually seen that work? तो उनका कोई जवाब आया नहीं. अभी वापस I will follow it up. So complex motions of परमाणुज and स्कंदास could be like vortices. तो vortices जो complex motion मानते हैं परमाणु की, तो वो concept यहाँ पे भी लगता है कि ये जो motion है और अपने जो मतलब परमाणु की जो motion वो describe की गई है, अलग अलग word use किए गए
वो 4-5 ढक गए. So that again shows a similarity between the two concepts. उसके बाद एक वो कंसेप्ट डिफाइन करते हैं ऑर्डरोपी. अब जैसे एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी रिप्रेजेंट डिसऑर्डर. तो सिमिलरली उन्होंने उसका उल्टा मतलब एंट्रोपी का उल्टा अपोजिट मतलब तो उसको नाम दिया है ऑर्डरोपी एंड दैट रिफ्लेक्ट सम काइंड ऑफ ऑर्डर. तो एंट्रोपी रिफ्लेक्ट्स डिसऑर्डर whereas ordropy reflects order, some kind of order मतलब. So as we have shown earlier, we are constantly generating entropy in all walks of life through say economy. ये मैंने थोड़ा ये पहले का रेफरेंस है. तो उस एंट्रोपी को अपोजिट जो है ये ऑर्डरोपी है. तो ऑर्डरोपी इज ए ऑर्डरिंग मैकेनिज्म विच इंड्यूसेस ऑर्डर इन द सिस्टम मतलब. तो ऐसा एक वो कंसेप्ट उन्होंने इसमें डिफाइन किया मतलब. ये जो है नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये मतलब साइंस को इस मॉडल से डिस्टिंग्विश करता है मतलब. एंड दिस आई हैव लाइक वेरी मच बिकॉज दिस इज इन एग्रीमेंट विद द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी हैव. The current science is based on Popperian theory of falsification, in which one has to go on rejecting the false results till true results are discovered. Now, discovery of electric bulb by Thomas Edison Alva can be mentioned to understand this, in which thousands of samples were tested and rejected till the right combination was found. ये मतलब Popperian जो philosophy है. Hence, they have introduced a model known as lower dimensional feasibility and absent falsification. उसका नाम दिया है LFAF. अब इसका मतलब यह है कि अगर अपन लोअर डायमेंशन में है तो उन लोअर डायमेंशंस के अंदर वो है जो कोई फिनोमिनन फिजिबल है मतलब, लेकिन वो रेगुलर अकर नहीं होता है मतलब वो क्या रेगुलर नहीं होता है तो हम उसको गलत नहीं मान सकते मतलब. ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, पैरासाइकोलॉजी में हमने देखा है कि बहुत से इवेंट्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, हम रिपीट नहीं कर सकते उनको, लेकिन उनको गलत नहीं कह सकते हैं मतलब. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा मतलब वो 3 एग्जांपल मेरे मतलब लाइफ के है मतलब कि मेरे फादर की जब मतलब डेथ हुई थी तो उनको 10 दिन पहले मतलब पता लग गया था मतलब उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया था कैसे उनके जाने का टाइम आ गया है. इसी ढंग से 2 मेरे रिलेटिव हैं दूसरे, उनका भी ऐसे ही केस था मतलब कि उनको पहले पता लग गया था मतलब. और एक तीसरे केस के अंदर एक उनके दूसरे रिलेटिव उसको पता लगा कि कोई टेलीफोन आएगा और वो खराब खबर होगी मतलब. अब ये ऐसे जो मैसेजेस हैं हम कहें कि आज की साइंस के हिसाब से दे शुड बी रिपीटेबल, तो वो रिपीटेबल नहीं हो सकते मतलब. बट वी कैन नॉट से दैट दे आर रॉन्ग. अब ये एक बहुत प्रोफाउंड कंसेप्ट मानता हूं मैं. और इसके अंदर भी एक हुई है मतलब स्टडी कि जो पैरासाइकिक फिनोमिना है वो फर्स्ट टाइम जो होता है इट इज वेरी इजी मतलब टू अंडरस्टैंड, पर उसको वापस रिपीट करना चाहो तो सेकंड टाइम हो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं मतलब. इट कैन नॉट बी रिपीटेड मतलब, बट यू कैन नॉट से इट इज रॉन्ग. तो ये जो कंसेप्ट है ये आई इन माय ओपिनियन इज अ वेरी प्रोफाउंड कंसेप्ट. The recent observation by Professor Mohanty on study of mixture, ये तो हो गया. उसके बाद lower dimensional feasibility and absent continuation. So some phenomena may be observed in the lower dimensional reality also, and so they are feasible, but they may occur rarely, and so they cannot be proved as false. But since they are occurring rarely, so they cannot be repeated again and again at different places and times. A condition for them to fall in the realm of the modern science. मॉडर्न साइंस में डेफिनेशन है कि कोई भी फिनोमिनन है वो किसी भी प्लेस पे किसी भी टाइम पे रिपीटेबल होगा, ओनली देयर इट विल फॉल इनटू द डोमेन ऑफ साइंस. और मेरे हिसाब से क्या है कि ये कंडीशन डिफाइन करके साइंस हैज नैरोड डाउन इट्स ओन पोटेंशियल आई वुड से. So it has ignored many phenomena of this type which are not repeatable and they are irreversible, so they cannot be repeated with the space and time. So science की जो mere definition है उससे मतलब it has narrowed down itself. I mean, so we cannot say it describe the reality or the truth in totality. Science describes only a part of the reality. Reality could be much bigger, much bigger than what science is able to describe. And this we have to further discuss. So many of the parapsychic phenomena falls in this category. So they cannot be treated as scientific in the current definition of the modern science, which is based on 3-dimensional space and 1 dimension of time. Thus, TDVP is an extension of the modern science. However, if one can access these higher dimensions through some deep meditation,
and other practices or any other procedure, then even may occur more regularly. That is to be again examined. But in higher dimensions, things may be, more precise, I could say, and they may occur more regularly. They may, I don't know exactly. This has to be examined further. So, therefore, truth is therefore relative and not absolute as in Jainism. Depending on the dimensions which you are accessing at a given moment of time, it will be relative. So it cannot be. Uh, uh, Again, this is my interpretation. So that again need to be further discussed. So hence the degree of truth experience is also relative and not absolute. It is similar to relative truth or Shadvad and Anekantvad or even Nayavad. Similarly, they say that consciousness is present in all forms of physical systems. So its implication, TDVP model assumes presence of consciousness in all forms of matter. So as per Jainism, also following systems also have life. Pratvikaya, Vayukaya, Apkaya, Vanaspati and Agni Kaya, for example. So similar thing is there in their formalism also, because each one can have some component of consciousness, maybe of lower level or something like that. The existence of life without physical support, ये थोड़ा अगेन जो सुषमा जी ने जो बात कही थी उसके लाइट में I will just slightly modify. So in the modern science, all life forms have certain physical support systems like human bodies. They are controlled by DNA, RNA, and other such molecules, which have information inbuilt in them. However, TDVP model consciousness can exist without any support of matter also. Hence, life is possible without DNA and RNA also. Now, this again is to be further examined. So, in Jainism, we talk of Devi Devta might exist with minimum physical structure like Vakriya Sharir, for example. So they may not have DNA and RNA, but still they are living. Actually, they are living bodies. So this is again, in my opinion, it is a profound agreement between the two. Then no existence of God in TDVP model and Jainism. There is no concept of God in Jainism. The whole universe runs on its own set of rules. It consists of 6 substances which govern all aspects of the universe, that is both living and non-living beings. In the same way, there is no concept of God in the TDVP model. There is mass, energy, space, time, and consciousness, and Gimal govern all functions of the universe. Then existence of Karman, Vakriya and Aharak Sharir is also possible because of actually their domains are more general, more general. So different type of matter and its association with consciousness or soul is possible. So from that point of view, there is some hint, I would say, that these are possible. Then concept of telepathy and clairvoyancy both in TDVP and Jainism. As consciousness is present in TDVP model and it results into possibility of existence of parapsychic phenomena which are beyond the boundaries of space and time, but are due to correlation at very fundamental level, due to quantum entanglement, for example. It is being discussed these days that this could be one important aspect which can explain clairvoyance and telepathy also, because of this attribute of quantum entanglement. तो ये कंसेप्ट ये मैंने वो दूसरे अभी बीच में मैं नहीं लाऊंगा इस टॉपिक को, लेकिन ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट जैनिज्म के अंदर भी बहुत ही मतलब वो डायरेक्टली निकल के आ रहा है, वो 47 शक्तियों का जो वो इन्वेस्टिगेशन किया है मैंने तो अवधि ज्ञान and मन पर्याय ज्ञान of Jainism now possible whose existence is not seriously recognized in the modern science. तो मॉडर्न साइंस के अंदर को अभी बहुत कम साइंटिस्ट है वो मानते हैं इस चीज को, पर जो हार्डकोर साइंटिस्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर फिट नहीं होते हैं, मतलब तो दे डोंट रिकॉग्नाइज, बट दैट इज means they are going away from the reality. Reality is different from what science is able to describe. That we have to be very clear, and I am very clear about it, and I want to emphasize again and again that through science we are describing only a part of the reality. Reality is much bigger than what science can describe.
Now, knowledge and evolution in TDVP and in Jainism. In Jainism, evolution of consciousness is extensively talked about. This evolution is accompanied with decrease in quantity of matter karmas associated with the soul and increase in the knowledge content of the soul. The evolution is such that the soul becomes more and more pure at every stage of 14 stages of evolution, which are known as Gunisthanas. Similar case is possible in the TDVP model also. They also talk of evolution, and their evolution concept, they straight away say it is different from the Darwin principle of evolution. So, I mean, then again, there is some kind of agreement here as well. I mean. So, I will just say that there are 3 more slides. A comparison between TDVP and Jainism. Actually, I forgot to say that Gimal which they are talking about, that Gimal may have some relation with Dharmastika and Adharmastika. Some relation, I don't know, I have not yet explored it, but I feel there may be some connection between the two. So, I mean, this is a brief summary of the comparison. TDVP on the left side, Jainism on the right side. There is no God in TDVP, there is no God in Jainism. Finite universe is discrete, but an infinite one embeds it. Now, similarly, in Jainism, finite lokakas has an infinite alokakas around it. Then space and time are discrete in TDVP model. Akash and time are discrete in Jainism also. Clairvoyance and telepathy can be explained using the TDVP model. Avdigyan and Manparya Gyan are real, they exist. They do not fall into the current terminology of science, but it doesn't mean that they are not there. So, so, so this TDVP model is better than the current scientific models. Concept of distinction is common to all fields. Concept of padya is common everywhere. I mean. So consciousness is different from matter and energy in TDVP model. Here also in Jainism, the jivastika is different from matter. Then consciousness is non-local and has infinite information. Pure consciousness has infinite knowledge. That again has to be further studied. Some latest model talk of both local and non-local information, actually which I will cover separately afterwards. So now the second slide, the vertical motions are there for objects in different dimensions. Now please note that these vertical motions are there in different dimensions, not necessarily space dimensions only. I mean, so that is to be examined. So this concept of vortex is much more complex than what we have in the modern science. Now, Jainism, Parmanus have different types of motions. Then consciousness is associated with all types of matter. Pratvikaya, Vayukaya, Agnikaya, Vanaspatikaya all have some type of life and consciousness. Now, and here this Gimal is a non-physical entity with no mass and no energy in 3S1T dimension. And we have this Dharmastika and Adharmastika, which are Gimal and Diva, but they exist, so they may have some similarity with what they are talking as Gimal. Now, evolution of consciousness is possible and is different from Darwin's principle. Evolution of Jiva through 14 Gunisthanas is possible with increasing knowledge. Then as one evolves, entropy builds up. As one evolves through Gunisthanas, knowledge increases. And I have a feeling that with the increase in that knowledge, some kind of order also actually develops. Then matter can be associated with consciousness, TDVP model. Jainism, Karman, Vakri, Arak, Sharir are possible. Also, karma can be associated with Atma. I mean, the association is to be now clearly defined. It is not that they are interacting strongly, but they have some kind of correlation, I would say. Then consciousness can influence matter energy in different ways. Here in the TDVP model. Here now again, this is to be discussed. Lagdis and Siddhis are possible where soul can influence matter, or only it is the Karman Sharir which is influencing the Pudgal. That is to be discussed. I think it may, but some similarity is there between the two formalisms. Consciousness life can exist without matter, DNA and RNA also. Devi Devta may not carry any physical body. I mean, they do carry Karman Sharir and this thing, Bakri Sharir, but they may not contain this RNA and DNA molecule like thing. So this type of lives are possible. Then mysticism can be explained using higher dimensions.
And many mysterious processes exist which are found during higher stages of Jiva in higher Gunsthanas also. Uh, mm, uh, there was scientist Kaku, he has written a book about higher dimensions, and he has given example Ramanujan, for example, that Ramanujan had one deity, probably she used to provide some information to Ramanujan. I mean, so that kind of mysticism is also explainable. So, and I will not go into the details. It is 8:15. But Dr. Adil Jain, should I actually proceed? Should I continue for some time? Yes, you can go for 15 minutes. Okay, that's very good. So I will go now into some specific details, quantitative details. So this is an example of this claromance. So we know that both in TDVP model and in Jainism, we have example of this claromance or avdigyan and telepathy. I mean, now in Jainism, we have 6 different types of avdigyans are defined. So this is anugami is one. This gyan is carried over to other places from the place of its origin. Then ananugami, it is not carried over to the other places and it disappears when one moves from that place. Then this Vardhaman of the Gyan, it is very small to begin with, assuming better space, time and feelings, but can be developed through spiritual practices like Anima Siddhi and others. Then this Heman, this one is very good in the beginning, but declines due to indiscipline and wrong activities. Then this patipati, it just disappear like flame of a lamp due to wind, and also it comes like a momentary impulse and then disappear in no time. And then the sixth type of the jam, apratipati. This type doesn't disappear and continues till one gets Keval Gyam and it merges into Keval Gyam, absolute knowledge. Now, I want to be very clear about this now that this strongly support that these phenomena, they will not fall into the domain of modern science, because modern science will say that any phenomenon should be repeatable at space and time at different space points at different times. So only then it will fall into the domain of modern science. But this is, if we believe that this is correct, these 6 type of Udhigyan, and I feel they are correct, then in that case, they may not fall into the modern science, but we cannot say that they are wrong. So this is a pratipati, and I have seen that this Jin Dhammo book of Acharya Radhalalji Maharaj, and there he has described that what are the capabilities of this Avdhigyan. So they say that one can look at the Atma Pradesh or single this Akash Pradesh also, and simultaneously they can also cover the whole universe as well. This is how it is defined, Amina. Now, what are the, how can we check it? I mean, that this is possible. So here I have given an example, it's a little difficult to read maybe. Can just, I think now it will be readable. So this is a table for measurement of length is given here. So you can see that on the left second column, there are what is the infinitely many Parmanus written in red, and they constitute what is known as Avsanna Sanna Skand. And this 8 of Sanna Sanna Skan, they constitute one Sanna Sanna Skan. And similarly, you can, this is a figure of 8 is coming again and again, again and again, up to this 13th row, where this in 13th row it is mentioned 8 yav units is equal to 1 angul. That is finger breadth. And then it goes up to yojam, that is in the 20th row, 4 crores units. So they talk of yojam. Now, what I have done is a simple calculation that this yav is nothing but barley, that is Joe. So actually, and this finger is nothing but our finger. So taking the size of finger to be about 2 centimeter, we do the back calculation to find out the size of this of sanna skan. And this side turns out to be about 2.9 into 10 to the power minus 11 centimeter. That is, this is 8 to the power minus 12 centimeter, and then we have to multiply that factor. So you will get this 2.9 into 10 to the minus 11 centimeter. Now, this is what it appears in Triloy Pannati. It is mentioned that this appears to have been arrived at using Avdhikya. So Avdhigyan of highest order, I would say. I mean, they can see the atoms and nuclei also. And this size, please note, it is
2.9 into 10 to the power minus 11 centimeter is between the Bohr radius, which is 10 to the power minus 8 centimeter, and the radius of nucleus, for example, size of the nucleus 10 to the power minus 13 centimeter. So within the statistical limits, I would say within statistical error, this is a good agreement and something we can take it quite seriously. Assuming that the objects which have been described here, that truth renu and sanna skand and thrust renu and rath renu and all these things, they were not exactly measured accurately. So some kind of error, some kind of, they might have been used to explain this actually. So taking that into account. But there is another evidence now, and which I am covering now, this occult chemistry of this Mrs. Annie Besant. She was a chemistry graduate, and she about 100 years ago learned Anima Siddhi, and she wanted to see the atoms directly from this clairvoyance. Because she heard about Anima Siddhi, she learned Anima Siddhi. Mr. Leadbeater, her colleague, he also learned this Anima Siddhi, and they try to examine to whether one can see atoms and their structure directly. So these are some of the examples what they have seen. They are described in a book known as Occult Chemistry. So Annie Besant was basically a chemistry student and studied in London University. Annie Besant and Leadbeater learned Anima Siddhi and started observing various elements and their atomic structure. And the Jinraj Das, the third person, he used to prepare drawings of what they have observed. So they used to give some kind of commentary and he used to prepare drafts. Then almost all the elements, some isotopes and few compounds were observed and studied. Annie Besant and Leadbeater had developed what is known as occult chemistry. Now here is the example, there's one example I want to show you, that in the middle, the second figure, that is this bigger one, a structure of hydrogen is shown, which was actually seen by Annie Besant and Leadbeater. And here you can see that in this middle figure, 6 big squares are there, and 3 big squares are forming one triangle, and another 3 big squares, they are forming another triangle, and each big square has 3 small squares. So in hydrogen atom, they have seen 6 big squares and 18 small squares. And among those 18 small squares also, some are positive, they have mentioned, some are negative. Now, if we go into the detail, this positive and negative, they then focus their attention on a single anu. And after observing, after focusing on a single anu, they found that actually there are 2 types of anus which are shown in this third part of the figure. That is, one is moving in one direction, another is moving in the other direction, and these are having opposite direction. So one has been labeled as plus, another has been labeled as minus. So these 18 are the anus are given in hydrogen atom. Now, if we compare this structure with the current structure of the modern science, then we find that here there is a proton at the center. There is the first figure, the first part of the figure with blue background. It shows proton in the center and an electron moving around it. Now, what it means is that they have gone much deeper than this proton and electron-like structure. And what is the evidence now? This is what we have studied, and I want to tell you now. These are the structure, and these threads which are seeing here. This one English scientist has studied it, and he said that there could be superstrings of the string theory, which scientists are examining in particle physics. So that is something very profound, and it is in conformity with what Jain acharyas have said, that Avdikyan has a scope of finding properties even at the Akash Pradesh level, on one hand, and on the whole universe on the other. So this is in agreement with what Jain acharyas have mentioned. Now let us focus on this table. I have given the rest masses of quarks. So you can see that in the first row I have mentioned constituent, their number, their rest mass. This rest mass is mentioned in a million electron volt divided by the velocity of light, and their normalized mass. Normalized mass means the mass of quark has been divided by the mass of the electron.
So you can see that on the first column, it is up quark, down quark, and electron. Then the second column, number is 111. The rest mass of up quark is 2.01 MeV upon C square. Down quark has a rest mass of 4.79 MeV upon C square, and electron has a rest mass of 0.51. So what has been done is that this rest mass of up quark has been divided by this rest mass of electron, and it has been reduced to an integer. So this normalized mass turns out to be 4 for the up quark, and for the down quark, it turns out to be 9. So this is again now close. The approximation has been made, so it is close to this integer value. So this is the assumption that this is nature is discrete at fundamental level. So this is, on this assumption, they have been reduced to integers. So this turned out 4, 9, and 1. Now, if we look at the structure of, and this 4 has been named as a quantum unit. So for up quark, the quantum unit is 4. For the down quark, the quantum unit is 9. And for electron, it will be 1. Sorry. So for up quark, it, now in the case of hydrogen atom, I mean, please have a look at the on the lower table. So number of up quarks for hydrogen atom is 2, and down quark is 1, and electron is 1. So if you multiply now this up quark with this quantum units, then you get quantum units corresponding to up quark as 8, quantum units corresponding to down quark as 9, and for electron it is 1. So if you add these three, then you get a figure of 18. Now this is most surprising indeed that this 18 is in complete agreement with the structure actually seen by this Henry Besant and Leadbeater through Clairvoyance. So this agreement is so perfect. I mean, it is really astonishing. I mean, it gives some kind of hint that this discrete picture of the reality could be a big truth. Now here what we have done is we have made a comparison for similar estimation has been done for different elements. So hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, and so on. So number of proton, number of electron, number of neutrons are given in the first 3 columns, and in the last column total quantum units are given actually. So this is number you can see on the in the last column for different elements. Now this is a little old slide, so I have given only up to calcium. And in this table, then the comparison is made. So you can see for hydrogen, it is 18 quantum units, and the number of anus which have been seen by them is also 18. So the difference is 0. And if you go to helium, lithium, beryllium, and so on, you can see the number on this 4th column. So you can see the difference between the two. And then we have made an estimate of the error in percent. And this error in percent, you can see that in the last column, it is around up to 10 only, or up to 11 maximum. And so the average error is about 9.25 only. This is in percent for all these 20 elements together. Now this we have repeated further again for 92 elements, or this hydrogen to helium. And it has absolutely, I would say, astonishment that we are getting almost a complete straight line for the 92 elements. On the x-axis, we have given the number of this anus, and on the number of quantum units on the x-axis, and on the y-axis, we have given the number of anus for 92 chemical these elements. And we are getting almost a straight line, like very within an average error of about 8%, 8.25% or so. So this is what it means is that this prove existence of Vardhaman Avdigyan and Apratipatti Avdigyan, as defined in Jainism within an agreement of 90%. So I will not go into further, but this is now last slide. This presentation is based on some very preliminary comparison between Jainism and TDVP model. Some similarities are quite remarkable, whereas others need further investigation. The two approaches provide a new way for scientists to understand reality. And let me just again emphasize that science describes a science as defined today describes only a part of the reality. Reality could be much bigger than what science can describe. So thank you very much.
थैंक यू पोखरना साहब, आपने बिल्कुल समय पर पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी को ये प्रश्न पूछने हैं तो कृपया हाथ रेज करें। जीसी जैन फ्रॉम जयपुर। जी सर बोलिए। अच्छा, थैंक यू सर। इसका बंद कर साहब देता हूं। आपने बहुत इसका बंद कर दो। पूर्वक